Pass over case, continue with item 32, SS 603 of 2017. SC number 603 of 2017. This appeal has been filed. Against the judgment dated 22nd of September 2017, passed in civil appeal number 36 of 2016, whereby the learned first appellate court has reversed the judgment and decree passed by the learned trial court. The suit was filed for declaration of right, title and interest as well as confirmation of possession and in the alternative for recovery of possession with respect to the suit land. The learned counsel for the appellant has submitted that by reversing the judgment and decree of the learned trial court, the learned first appellate court has failed to consider that the lands are non-transferable as per section 20 of the Santhal Pargana Tenancy Act, and therefore the transfer was a fraudulent transfer against the statute. He has relied upon the judgment passed by this court in LP number 571 of 2019 and has submitted that a compromise decree with respect to property covered under Chotanagpur Tenancy Act is
amounts to fraud on statute. He submits that the same principle applies to the present case covered under Santhal Pargana Tenancy Act. The learned counsel submits that since the transfer was fraud on statute, therefore the learned first appellate court was not justified in setting aside the judgment passed by the learned high court. Article Page 54 any pages. First separate code. 54. 54. Very good. Yes. This fourth line from the top. And first paper also acted this fact. It is based on that the party cannot be permitted to do directly what is prohibited from doing directly. Transfer in contribution. Page 54. Page 20 of the judgment also. Running page 50. Page 20 of the first separate code. Yes. Yes. The finding given by the first separate code. Read it, please. It is based on that the party cannot be permitted to do directly what it is prohibited from doing directly. A transfer in contribution of the provision of that will not cease to be so only because the parties have agreed and advised for the court to correct transfer in contributions of that. It will be nothing of fraud on the court as well as fraud against the statute. Apart from being a case of the transfer contribution. What is the period of limitation for recovery of possession under the Act? Because this limitation will not applicable in this case also because the applicant are getting the rent receipt and they are in the fiscal portion. It was a total question. Only the 2003 laws, the rent receipt was issued in favor of the defendant. Then the respondent defendant came to take the forceful position over the suit land laws. Then the respective instituted suit and also filed section 144 of CRC also. The learned counsel for the appellant has referred to the observation made by the learned first appellate court wherein a judgment passed by Honorable Patna High Court has been referred, which is reported in 1976 BLTR Patna 15 and has been held that a transfer in contravention of the provision of the Act will not cease to be so only because the parties have agreed in a compromise, and it will be nothing but a fraud on the statute. However, in spite of having observed that, the learned court was of the view that the matter should have been raised by the plaintiff against a decree passed by the additional subjudge in title suit number 22 of 1968. But no appeal against the same was preferred.
The learned court also recorded that the plaintiff had not raised any objection with regard to the compromise decree passed by the court in title suit number 22 of 1968. The learned counsel for the appellant has submitted that though there is a provision of limitation of 30 years as section 65 of the Limitation Act has been amended by making it applicable to Santhal Pargana area, but the same will have no applicability in the present case as the compromise itself is fraudulent in nature. After hearing the learned counsel for the appellant, this court finds that it is not in dispute that with respect to the same property and between the same parties, right? Between the same parties, there was a title suit number 22 of 1968. Father was Same parties or their predecessor in interest, there was a title suit number 22 of 1968. since my father was very that's why he could not find That's right. the Which ended in a compromise on 9/7/1968. During the lifetime of the father of the plaintiff who had entered into a compromise, the present plaintiffs, his 3 sons, had filed title suit number 79 of 2003 seeking a declaration of the right, title and interest as well as confirmation of possession or in the alternative recovery of possession of the suit property. It was asserted by the plaintiff that the defendants, on the basis of forged document, it was asserted by the plaintiff that the title suit number 22 of 1968
was a collusive decree. And it was admitted that their father was alive about 66 years, and it was asserted that he, being an old man, was unable to move. The defendants, they filed a written statement and asserted that the suit was barred by limitation for Stockwell accusants waiver and res judicata. And they also asserted that the recorded tenant, namely Bipu Kahar, long prior to passing of the SPT Act 1949, had permanently transferred the suit land in favor of Motilal Jha, and who came in possession and the father of the plaintiffs filed title suit number 22 of 1968 before Sub-Judge Jamtara. And decree was prepared, and after disposal of the suit, compromise decree was prepared, and after disposal of the suit, the defendant's father got his name mutated in case number 225/1969-70, and Jamabandi was split, and that defendant had not played any fraud. The father of the plaintiff had tried to disturb their possession 35 years ago, but failed, and accepted the right, title and interest as well as possession of the defendant. The learned court considered the learned trial court considered
the oral and documentary evidences and observed that the compromise decree was made on 9/7/1968. And that after obtaining compromise decree, the land was mutated in the name of defendant and they are in rent. Even then, the land cannot be transferred. And observe that Order 23 capital A of CPC is not applicable. However, the court observed that there is joint right, title and interest over the suit property of the plaintiffs, and since the plaintiff had not made all the heirs and successors of the recorded tenant as party, so their possession cannot be declared or possession cannot be recovered by the process of court. And after having declared as a proceed, the suit was partly decreed. So far as the learned first appellate court is concerned, the following points were framed for identification. Para 4 में the learned first appellate court also considered the oral and documentary evidences on record and recorded a finding in paragraph 12 as under 12 that the documentary evidences based on record revealed that title suit number 22 of 1968 filed by the father of the plaintiffs, namely Govardhan Ravani, was compromised by him, and subsequently the suit land was mutated in the name of Motilal Jha and recorded that the same was in possession of the defendants. The court has also recorded that since the title suit number 22 of 1968 filed by Govardhan Ravani was decreed on the basis of compromise on 9/7/1968, at that point of time, Santu Ravani at that point of time, with respect to 3 plaintiffs, that is Santu Ravani, Ramu Ravani, were not even born, and the third plaintiff was only 2 years old in the year 1960. The court also recorded that there was no evidence on record in support of the fact that the transfer was made fraudulently. And also recorded that the decree of compromise was passed on 9/7/1968
but the same was not challenged by the plaintiff and was of the view that the same was binding on the parties. The court also observed that the compromise may be void or voidable, but it is required to be set aside by filing a suit within the period of limitation. The court then observed that in the extant case, the plaintiff were not party in title suit number 22 of 1968, and no appeal was preferred by them within the point of limitation. The court also recorded that there was nothing available on record to show that the decree was obtained by fraud. And ultimately, the court held that the plaintiffs, having not challenged the compromise decree within the period of limitation, the same was binding on the parties. It is an undisputed fact on record that the compromise decree in title suit number 22 of 1968, which is dated 9/7/1968, was never challenged by the father of the plaintiffs, who was alive at the time of filing of the suit, and admittedly he is not even a party to the proceedings. And his three sons filed the suit alleging that compromise decree was fraudulently obtained, and the suit itself was filed beyond the period of 30 years. This court is of the view that the learned first appellate court has rightly set aside the judgment of the trial court, and accordingly there is no substantial question of law involved in this case. This appeal is hereby dismissed. सीतू साहू का जजमेंट है ना 30 इयर्स वाला, हाँ 71 में नहीं है, लेकिन उसमें रेगुलेशन को भी कंसिडर किया सीतू साहू का जजमेंट. The law is well settled by the Honorable Supreme Court that even under the provisions of Section 71, capital A, under Chotanagpur Tenancy Act, the claim for restoration of land is not maintainable after expiry of period of 30 years. After expiry of more than 30 years. To be mentioned. Under heading for to be mentioned case, item 9, second appeal 179 of 2025. It has been pointed out, the matter has been listed at the instance of the office. It has been pointed out that in order dated 4/2/2026, there is an inadvertent error in paragraph 8,
wherein the case has been directed to be posted on 18/2/2026 instead of 18/3/2026. Peruse the order, being satisfied with the office note. The next date in this case is directed to be read as 18/3/2026 instead of 18/2/2026, as mentioned in paragraph 8 of the order. Office is directed to make the necessary correction in the order. Post this case on the prefix date, that is 18/3/2026. Item 10, first appeal 221 of 2025. इसमें पारावन में सेकंड अपील हो गया, फर्स्ट अपील FA number 221 of 2025. In fact, it has been listed at the instance of the office. In paragraph 1, the term second appeal has been used instead of first appeal. Office is directed to peruse the order. There is an inadvertent error. Accordingly, the word second appeal mentioned in para 1 is directed to be read as first appeal. Office to carry out necessary correction. From the daily list at 2:15 under ready for orders item 1 CWJC 2022 of 2000. Why is it listed, sir? Plus, we have filed IA number 10390 of 2025 under order 22, rule 4 of the civil procedure. Because respondent number 6 had died during the pendency of the writ petition, and my lords have passed the final order. Then the respondent number 5, who is own brother of respondent number 6, filed petition for review of recall of the order passed by the minister. Then my lord said, please to recall that order, which was finally passed on, my lord, 16 July 2018. By which order I have recalled it? In the review petition. Review, my lord, was decided by this court, by order DT 14 February 2025. Okay. So, And lordship had given liberty to respondent 5 to give the name of the legal heirs of respondent number 6. Then they filed a IA petition giving the names of the legal heirs of respondent number 6 under order 2210A. Then when we came to the legal heirs of respondent number 6, then we have filed this IA petition, IA number 10390 of 2025 for substitution of legal heirs of respondent number 6 with the writ petition. The main contention of the respondent number 5 in the writ petition was that the judgment has been passed against the dead person. And so my lord has been pleased to recall that judgment. okay. Now you tell us that why didn't you take steps for substitution of respondent number 6? 6 respondents. Who died in 16/11/2005? My lord, actually we are not praying about it. My lord, respondent number 5, who is one brother of respondent number 6, he also did not inform the honorable court why the writ petition was being heard, though he had appeared in the writ petition. Okay.
Now, there is no noting in the entire file regarding death of respondent number Nothing, 6. nothing. See, read petition, nothing. On brother, respondent 5 is on brother of respondent 6. All the time he was appearing before the report. He died in 2005. Yes, madam. During the pendency of the petition. When the writ petition was filed, respondent 6 was alive. What is the name of respondent number 5? Respondent number 6 name is madam. Respondent number 6 has expired. Yes, respondent number 6. Dhani Pan. Dhani Pahan. Date Dhani Pan. Para 3 we have mentioned in my IA petition. The legal heirs of the respondent number 6. Yes. My lord, I will give the notice on the behalf and undertake to file wakalatnama. There will be legal proceedings on all the legal heirs, on behalf of all the legal heirs. With respect to respondent number 6. Yes, my lord. Mentioned at para 3. IA number 1039025. This petition has been filed for substitution of respondent number 6, who is said to have expired on 16/11/2005. The learned counsel for the petitioner has submitted that the writ petition was earlier disposed of, although the respondent number 6 had already expired, and ultimately the order of the writ court was recalled in review petition, and the writ petition was restored. And now the respondent number 5 has brought on record the names of legal heirs and successors of respondent number 6 by filing an application under Order 22.10a. And thereafter, the petition for substitution of respondent number 6 has been filed. The learned counsel for the petitioner has referred to the interlocutory application and has submitted that the names of legal heirs and successors of respondent number 6 is mentioned in paragraph number 3 of the interlocutory application. The learned counsel, appearing on behalf of the respondent number 5, submits that he is the brother of deceased respondent number 6, and he has received instructions to accept notice on behalf of the legal heirs of deceased respondent number 6, and he undertakes to file wakalatnama. You have received the wakalatnama? No, I have no issues. I have to procure the wakalatnama, but I have got the instructions. I will file. That's why I am seeking Within a week. 3 weeks. Because फिर किसका मरने का वेट कर रहे हैं? they are married daughters, so I'll have to procure wakalatnama from different places. They are all resident of Kutti. What But different one places? of the daughters are residing at other places now. You do not say so. Permanent resident is. आपने तो अपने पिटीशन में जो एड्रेस दिया वही एड्रेस डाला है ना? आपको 3 हफ्ता चाहिए. 2 weeks. Considering the submissions, however, he has no objection so far as prayer for substitution is concerned.
Considering the submissions, IA number 10390 of 25 is allowed. The counsel for the appellant is directed to delete the name of respondent number 6 from the cause title and insert the names of legal heirs and successors in red ink during the course of the day. The wakalatnama on behalf of the legal heirs of respondent number 6 be filed by naam bataiye. Ritesh Singh. Ritesh Singh. Ritesh Singh, advocate. Latest by (23rd) post on 25th. उस दिन तो हो जाएगा आपका केस. You are for the state. आप तैयार हो जाएंगे सर? I will be given 2 minutes. सर हाँ यही तो आपको अभी मिल जाए. उस दिन करेंगे सर 25 तारीख को. 25th को करेंगे आप मैटर. करेंगे. On the merit clause we are not recalling. Only of the judgment delivered against the dead person in that. That. अब तो वो रिकॉल ही हो गया ना. वो ठीक है. अब तो कोई बात ही नहीं है. रिट पिटीशन तो रिवाइव हो गया. इसमें एक बार आइए जो इन्फॉर्मेशन. अब वो इन्फॉर्मेशन वाला भी क्लोज कर दीजिए. दोनों आइए क्लोज कर दीजिए. रिव्यू में तो रिकॉल कर दिए होंगे ना रिट का ऑर्डर. रिकॉल हो गया था ना ऑर्डर. Item 2 WPC 2259 of 2004. Yes. See, the state is the petitioner in the state petition and pursuant to last order of this honorable court, notice has been served. It is found that respondent number 1 is dead since 2011. So the proceeding is abated. Yes, proceed the way. क्या करें? Dismiss कर रहे हैं Lordship, उस पर पे बस एक बार चूंकि स्टेट है इसमें तो एक बार हाई ऑफिसर से बस एक या 2 दिन का समय जो उन लोगों से इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं अकॉर्डिंगली लॉर्डशिप इज नेक्स्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज द पोजीशन. एग्जीक्यूशन केस में क्या होगा? What is the status of the execution case? What is the status of the execution case? That we don't lordship instruction on that. Lordship. Because I is also 2006. Before I is. यहाँ से स्टे करके पड़ा हुआ है इसलिए वहाँ पड़ा हुआ है. यहाँ पे स्टे है ना. WPC number 2259 of 2004. This is a petition filed by the state. As per the supplementary affidavit filed by the state, the respondent number 1, Yes. Vijay Kumar Mutani, expired on 28 December 2011. Apparently, the proceeding has abated. The counsel for the appellant, the petitioner submits that the matter be posted tomorrow.
कल। Item 3 WPC 35250/2004. Yes. Present it has been filed. Service the order passed in partitions to payloads. Partitions. By which substitution of the players of plaintiff has been denied after passing of preliminary in final declaration. After passing of the final decree. Preliminary फाइनल डिग्री हो गया? नहीं वो फाइनल डिग्री क्योंकि हमारा केस प्लेंटिफ के एस को सब्स्टिट्यूट नहीं किए एज ऑन द ग्राउंड ऑफ इट इज एप्लीकेबल। उसके बाद रीट फाइल हुआ, रीट 2 बार डिसमिस हुआ, रिस्टोर हो गया। इस बीच में 2009 के बाद बहुत सारे लिस्ट ऑफ डेट्स बनाइए ना, इतना कहानी हम कैसे सुनें? नहीं, आप तैयार है ना? बाद में टाइम नहीं मांगिएगा, सुनना शुरू करने के बाद टाइम मत मांगिएगा। नहीं तो ट्रीटमेंट तो होते रहेगा ना लोग का, मरने का मत वेट करिए। ट्रीटमेंट तो होते ही रहेगा, इतना पुराना है, 76 का पार्टीशन सूट है, तो लोगों का ट्रीटमेंट तो होना नेचुरल है। फिर बोलिएगा मर गए, अब सब्स्टिट्यूशन करना। during pendency of CMP petitioner seeks permission from court. नहीं एक सेकेंड, ये तो रिट पिटीशन फाइल हुआ ना? Yes. यू आर चैलेंजिंग विच ऑर्डर? I am challenging 227 का है ये? yes. तो 227 का रिट मेरे पास है। Heading to CMP से सारा रीट ये 226 में कैसे फाइल की? 226 उस समय दोनों चलता था। कॉन्स्टिट्यूशन आपके रीट फाइल करने के बाद अमेंड हुआ है क्या कुछ? तो ये 226 में कैसे फाइल की? 2004 का फाइलिंग। तो आप 226 में इस रीट पिटीशन को कैसे फाइल की? 227 का मैटर है। From mention of provision of law can not defeat the purpose of उस समय चूंकि रीट दोनों सेक्शन फाइल 227 में फाइल होता था, 226 में फाइल होता है। अभी 227 को अलग CMP एडिंग इसलिए मेरा तो आगे के लिए नोट से वन आई फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ पिटिशनर नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन के केस में फिर सब्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ रीट मरेंगे ना लोग। आई नंबर 1657125 for substitution of petitioner number 2 to add on 5/12/2025 after the expiration of the case. और डीएफडी भी हो गया। आपको नहीं लगता है यहाँ पर सारा पेंडेंसी काउंसिल्स के कारण है? आपको ऐसा महसूस नहीं होता? हमको ऐसा महसूस होता है या जितना भी पेंडेंसी है, नॉट बिकॉज ऑफ कोर्ट, it is because of the litigant and their ill advised and who are ill advised from time to time. तो सिविल लिटिगेशन में खाली मरने का ही कहानी हम सुन रहे हैं। 76 में आपका जन्म हो गया था? नहीं हुआ था ना, आपके पहले का सूट है ये। बताइए। ये क्या ऑर्डर हुआ है तो सीएमपी में? CMP में रजिस्टर हुआ है अच्छा, ये रेस्टोर हुआ है। और
फाइनल डिसीजन नहीं बनता जब तक पार्टिसिपेंट को पेंडिंग नहीं रहता। आपको क्या बोलना है? ये पिटिशनर का आप सब्स्टिट्यूशन फाइल कर रहे हैं ना? हाँ, इनका वकालतनामा कहाँ है? वकालतनामा फाइल है ऑन रिकॉर्ड। सबका कर दिए हैं? हाँ, पिटिशनर का कर दिया। जितना भी सब्स्टिट्यूट प्रपोज लीगल ईयर है सबका कर दिए हैं? जी, आपको क्या ऑब्जेक्शन है? मेरा इसमें ऑब्जेक्शन है, सीरियस ऑब्जेक्शन है कि जो प्रेजेंट इंप्यूट ऑर्डर जो 31 से 35 में है, तो दिस वाज फाइल्ड बाय द इनऑर्डिनेट डिले। कैसे इनऑर्डिनेट डिले? इट रिमेन डिसमिस फॉर डिफॉल्ट। वो डिसमिस फॉर डिफॉल्ट तो बोल जो ये पिटीशन जो देखा जाता है केस 32 हो जो आएगा 32 मतलब केस 33 होती है। पहले तो आईए का निपटारा करेंगे ना। जो ये एक जो अपडेट होने के बाद जो लीगल हेयर्स है इट शुड बी सब्स्टिट्यूटेड बिफोर द लैंडेड कोर्ट। ये जो आए हैं एक अगेंस्ट द अपडेटमेंट ऑफ द ओरिजिनल प्लांटिंग, उसके बाद में और सब सारा डिफेंडेंट अपीलाट दोनों साइड्स का डेथ हुआ है। तो ये रीट में तो वो हम लोग देखेंगे ना मेरिट पे क्या है। पहले तो आप हमको ये बताइए जो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द रिट पिटीशन इफ समबडी हैज डाइड कैन एनी ऑर्डर बी पास्ड? क्या होगा? नहीं तो फिर ये पहले जब तक आईए नहीं अलाउ होगा तब तक क्या ही प्रोसीड करेंगे? आईए नंबर 13068 of 2025। इसमें डिफरेंट है। पिटिशनर का आईडी नंबर 1657। ये किसका आईए है? ये रेस्पोंडेंट का है। इसमें रेस्पोंडेंट है। ये लोग भी सब मर गए, हाँ, दिया पूरा खाली केस जिंदा है। एक बात बताइए, जिन लोगों का सब्स्टिट्यूशन की बात आप यहाँ कर रहे हैं उनको सीएमपी में सब्स्टिट्यूट किए थे? पिटिशन दिया हुआ था। पिटिशन दैट वाज अलाउड। तो पार्टी पोजीशन में नाम दिखना चाहिए ना सबका। पार्टी पोजीशन में क्योंकि आईए पर लिस्ट हुआ था उसे उसको पूरा फाइनल ऑर्डर पास कर दिया गया। तो ये क्या, ये जो पार्टी पोजीशन इसमें सीएमपी के ऑर्डर में ये गलत है? गलत है ये? All the substitution was allowed in the CMP. नहीं अलाउ नहीं हुआ, आईए का डिस्पोजल हो गया सीएमपी। आईए allowed। नॉट बिन डिस्पोज्ड ऑफ हो गया। डिस्पोज्ड ऑफ से क्या मतलब? भी चाहिए। पहले तो ये बताइए किसका किसका सब्स्टिट्यूशन है? बताइए तो किसका सब्स्टिट्यूशन है? आइए नंबर बताइए। 13068 और 25। ये किसका सब्स्टिट्यूशन है? रेस्पोंडेंट नंबर 2, 3 and 9 2, 3, 9 and for deleting the name and address of respondent copy numbers 1, 2, 3, 7, 9 and 1, 2, 3, 7, 9 and 7, 9 and 12। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन ऑफ रेस्पॉन्ड नंबर 2, 3 and 9 is एंड साथ में डिलीटिंग ऑफ रेस्पॉन्ड नंबर 1, 2, 3, 7, 8 and 9 7, 9 and 10। I have explained it. इनके लीगल ईयर्स व्हेन डिड दे डाई? And नाम बताइए रेस्पॉन्ड नंबर 2 का। in para 5 respondent number 2 का नाम बताइए। Sergio Vargas. Respondent number 1 is Uma Devi University. रेस्पॉन्ड नंबर 1 का सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सिर्फ नाम डिलीट करना है। Respondent number 2 is son of respondent number 2 Uma Devi who died in university from 18 सरजू देवी। Sergio Vargas. Respondent number 2 is Sergio Vargas. हु डाइड व्हेन? 18/8/2006. और ये उमा देवी डाइड व्हेन? Uma Devi died on 30/6/2011. आप हमको ये बताइए सीएमपी में ये इन लोगों का सब्स्टिट्यूशन हुआ था? हम
आईए फाइल किए थे, उस आईए पर हियरिंग के लिए लिस्ट हुआ था, उसी आईए के हियरिंग के दौरान सारा पिटीशन अलाउ हो गया और एक इसमें कौन सा आईए नंबर था जो आपने सीएपी में फाइल किया था जो अलाउ हो गया? 6760 6760 तो कॉन्डोनेशन ऑफ डीए है 6760 365 of 21 24 1 2 3 7 9 and 12 इसमें आप 10 बोले हैं। टेन कौन है? गीता देवी। टेन तो इसमें पार्वती देवी है, 12 होना चाहिए ना, इसमें भी 12 होना चाहिए, तो आप 10 गलती से बोले। दिस वाज अलाउड इन सीएपी बाय विच ऑर्डर? order dated 11/7/2025. That is part of the 3625 कहाँ है 3625 पर ऑर्डर? 3625 और 24 का ऑर्डर कहाँ है? सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर कहाँ करवाए हैं? सब्स्टिट्यूशन उसी लिस्ट हुआ था, उसी में हम बताया एक सारा आईए पर हियरिंग हो रहा था, उसी दिन डिस्पोजल कर दिए। और फिर एक पारा में मेंशन कर दिए कि अंडर सर्कमस्टांसेस प्रेयर मेड इन द आईए इंस्टेंट आईए तो कौन सा आईए? तो 6760 पे ना चल रहा था, लिमिटेशन पे ना चल रहा था, पूरा का पूरा हियरिंग लिमिटेशन पे हुआ है, आपका सब्स्टिट्यूशन नहीं अलाउ हुआ है, हम नहीं अलाउ करेंगे इसको। सब्स्टिट्यूशन अगर आप डेड पर्सन के अगेंस्ट में सब्स्टिट्यूशन करके आप रेस्टोर करा लीजिएगा तो ये आप कैसे रिवाइव करेंगे? अगर आपने कोई सब्स्टिट्यूशन अलाउ करवा लिया है व्हेन अ डेड पर्सन इज देयर ऑन रिकॉर्ड और वो सब्स्टिट्यूशन आपका अलाउ नहीं हुआ है तो हम तो नहीं अलाउ करेंगे आपका यहाँ, बिकॉज दिस रिपीटिशन वी विल नॉट परमिट दिस। सबसे आपका रेस्टोरेशन में बहुत ध्यान देने का जरूरत है। तो क्या हम करें? हम नहीं ऐसा करते, बियॉन्ड लॉ हम नहीं कंसिडर कर सकते। रेस्टोरेशन में बिना सब्स्टिट्यूशन अलाउ कराकर, राइट, और रेस्पोंडेंट है उनको तो नोटिस जाता, फिर and earlier stage lordship without receiving notice on the expense of notice he dismissed the lordship.
रेस्टोरेशन में तो सारा कहानी करना पड़ेगा। रेस्टोरेशन भी तो इतना टाइम बाद था। कब आप फाइल किए? बहुत साल बाद। इस बीच कितने लोग मर गए? 12 साल ठीक। के बाद में फाइल आप 12 साल के बाद रेस्टोरेशन फाइल किए हैं। किया। मेरा पैरासिट में जो ऑब्जेक्शन मेंशन है। Partitions of the bed take after passing of preliminary degree. Right is already existed. तो आप अपना CMP का ऑर्डर तो मॉडिफाई करा के लेके आइए। हम नहीं परमिट करेंगे ऐसे। 6 महीना दे दें, 2-4 लोग और मर जाएंगे। ये आप लोग को नहीं समझ आया इस बात का? रेस्टोरेशन के समय 1.5 आदमी रहेगा पार्टी, उसको मॉडिफाई कराइए, उसमें नोटिस कराइए उसको ठीक से। आप उसको अभी एक आध केस में और हो रहा है ऐसे। दो लोगों के बीच में पार्टीशन हो जाएगी, कम से कम 50 लोग हैं। देखिए इस तरह के मैटर से कॉम्प्रोमाइज में सलटते हैं। कुछ कॉम्प्रोमाइज का संभावना है कि आप लोग उसमें भी आड़े आइएगा। कुछ मीडिएशन, कुछ कॉम्प्रोमाइज का संभावना है कि लड़ते रहिएगा आप लोग 5 जनरेशन तक। बताइए। इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। कुछ कॉम्प्रोमाइज का संभावना है तो बोलिए हम मीडिएशन में भेज सकते हैं। सब लोग बैठ के कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। ब्रांच तो 2 ही होगा ना, हाँ, दो ही बाकी तो सब भाई बहन में पार्टीशन था। भाई बहन का पार्टीशन है। बताइए, शर्म नहीं आ रहा आप लोग को लड़ने में? कुछ करिएगा आप लोग, कैसे ही चलते रहे। हाँ, क्यों नहीं है आप लोग इसमें कॉम्प्रोमाइज के बारे में सोचते हैं? आप बहन है कि भाई? ये बहन कितना कमरा है? 2 कमरा है कि 3 कमरा है जिसका पार्टीशन का आप लोग कहानी कर रहे हैं? 2-3 कंपनी प्रॉपर्टी ज़्यादा था। लगभग 11.5 एकड़ की प्रॉपर्टी है। अभी तो बहुत सारा इधर उधर डिस्पोजल भी हो गया है। उसके मैरिज में कुछ का डेथ पे बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गया है। इतना लॉन्ग का सब्जेक्ट टाइम। राइट एक्सटिंग्विश का बात ही कहाँ कर रहे हैं? हम तो सेटलमेंट का बात कर रहे हैं। हम बेटी आपको शेयर दे देंगे बांट लो क्योंकि जो प्रेजेंट पोजीशन वो नहीं, एक सेकंड जरा ये समझिए। बेच दिए हैं बहुत सारा है। कोई बात नहीं, बेच दिए तो एडजस्ट होगा ना। हाँ एडजस्ट होगा। बेच दिए तो एडजस्ट ही होगा, उसमें क्या होगा? कुछ बैठ के बातचीत करेंगे कि ऐसे ही चलते रहेंगे? बताइए। इंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा। आप लोग के लिटिगेंट लगता है यहीं बैठे हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, 76 का सूट को लेके भाई बहन लोग लड़ रहे हैं, शोभा नहीं दे रहा। During the course of hearing, it transpired that the writ petition has been restored. Although the petition for substitution filed in the application for restoration, although no order was passed on the petition for substitution filed in the application for restoration. Restoration, substitution of deceased respondent number 239 counsel for the petitioner seeks adjournment. इसको आपको रिकॉल कराना पड़ेगा। ये भाई पे लॉक हो सकता है। ये भाई ये लॉक हो सकता है जो 25 में मैंने आफ्टर रजिस्ट्रेशन पहले उसको कर दीजिए, इसके बाद अलाउ।
post on 2nd April. Under heading for admission, item 4, WTC 714 of 2004. Yes, sir. Wait, please, Your Lordship. Lord, I bring to notice to the government court, Lord, that similar issue has been decided by Your Lordship, Lord, and remanded. Now here adoption of Ramdhani Bhagat, Lord, of which Your Lordship in the second appeal. Now this is, we are come against the commissioner, order of the commissioner, who has upheld the orders of the settlement officer and Lord, the assistant settlement officer. What I was praying, Lord, is this, that since on the same issue, second appeal was also there before this honorable court, and Your Lordship, Lord, had given the verdict on 27th of January, Lord, a month back, Lord. Now, that has not been uploaded, Lord. We will go. I pray that a time, Lord, be given. We'll decide the case on its own merit. This is, Lord, second appeal 204. This is not a second appeal. This is a writ petition. This is You writ argue your petition. writ petition. This is writ petition. You argue your writ petition. Lord, it will be proper. Substitution of respond number 7A was filed, and that IA has been rejected. Right? Lord. As against respondent number 13C1, 13C2, and respondent number 7A, 8A, 8C, they have all been rejected. अब आपको क्या relief मिल सकता है? खाली इतना बताइए. The proceeding has abated. The proceeding has abated. No, there are other also. So what? बताइए, उनके अगेंस्ट में अलग रिलीफ था आपका. Joint relief था that claiming on the basis of registered adoption deed of 1961 executed by one Har Narayan Bhagat. सब कुछ बचेगा this इसके issue, बाद जिनके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग अबेट कर दिया है. रिलीफ इनको मिल नहीं सकता उसके अगेंस्ट में, इसलिए अबेट तो नहीं करता है, रिट अबेट नहीं करता है. रिट नहीं अबेट करेगा सर, लेकिन डेड पर्सन अगर रिकॉर्ड में रहेंगे, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो प्रिंसिपल्स तो अप्लाई करेगा ना. प्रिंसिपल अप्लाई करेगा. हाउ कैन द रिलीफ बी ग्रांटेड? Yes, relief cannot be in granted. connection with those against whom the order has become final. Yes, yes. अबेटमेंट बोल के सीपीसी नहीं अप्लाई करेगा, प्रिंसिपल तो वही अप्लाई वही करेगा. डिफरेंस हो जाएगा. Against them, it has become final. It has become final. तो कौन थे ये 7, 8 कौन थे? They all are post-serious that the pedigree has been given to the writ application itself and paid. Why? the dispute, Lord, is with regard to the share. Adopted अगर हम हो जाते हैं जो रजिस्टर्ड डीड से है, तो हमको भी उसमें शेयर मिलेगा. इट वाज अ पार्टी सेकंड अपील जो था, दैट वाज लॉर्ड 204 ऑफ 2007. सर आप किसमें है वो उसकी बात आप छोड़िए. इसी पार्टी का सेकंड अपील है क्या? इसी पार्टी का लॉर्ड, विद सेम पार्टी लॉर्ड, With सेम इशू ऑफ एडॉप्शन लॉर्ड, एंड दैट इज व्हाई आई से लॉर्ड. एंड और अभी तो रिसेंट जब आप आपके फेवर में ऑर्डर किए हैं, आपके फेवर में ऑर्डर किए हैं, रिमांड किए हैं कि एडॉप्शन को डिसाइड करने के लिए फ्रेश. तो फिर मैंने ये आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. that's right. The point is then this writ petition must have become infructuous. That is why. तो इसमें हो जाएगी हुजूर, उसमें जो ऑर्डर होगा, क्योंकि कमिश्नर का ऑर्डर है और वो सिविल सूट चल रहा है, ठीक है. तो इतना बार खाली हो जाए कि लेट अस अवेट, और उसका जो ऑर्डर होगा अवेट से क्या होगा? ये दैट विल प्रिवेल. इतना तो अदरवाइज दिस सर आप हमको बताइए दोनों का हुजूर का क्या जो है? ऑर्डर है उसको ये प्रेजुडिस सर करेगा. वो सूट का और इसका क्या लिंक है दोनों का?
after passing of remand order, again the party agreed will come before this court. That's right. Final तो होता नहीं है कि whether Ramdhani is adopted son or not. जब उनका final हो जाएगा verdict, he is adopted son, then he may claim again to He be will claim recorded. again on the basis of that decree. Oh yes, that is what. That should be sufficient. Yes, that will. उतना ही हमको उनको प्रोटेक्शन इसमें दे दिया है, क्योंकि ये कमिश्नर का ऑर्डर as against the order passed by this honorable court remanding not for fresh consideration on the इसमें issue सूट of के बारे में adoption. नहीं लिखे हैं, इसमें सूट के बारे में नहीं लिखे हैं. Then second appeal नहीं इसमें नहीं लिखे. और second appeal 204 of 2007. Second April 204 When this matter was pending, of 2007 the matter Decided by your decided on 27 January 26 matter by this remanded to honorable appellate court. and remanded for fresh consideration. Yeah. I mean fresh To the yes. on the issue of adoption. Lordship might be remembering the matter of substitution was kept in abeyance. Yes. And Yes, after yes, death I of remember. his father, yes. After death of his father, he was substituted. Yes. He was not given the opportunity to contest. That's right. Therefore, Lordship is remanded. Yes, yes. There was title suit number 70 of 1973 की ऐसा कुछ. वो पुराना केस उसमें भी नहीं है. Title suit 70 of 74 Lord was filed in which Lord declaration was made in favor of my adoption. In the title suit. In the title suit earlier. Okay. और 61 का रजिस्टर ये जो हम डिसाइड किए हैं वो कौन से Sir. टाइटल सूट से अराइज करता है? वो टाइटल सूट से अराइज करके कौन सा केस नंबर? हाँ बता रहे हैं. ये टाइटल सूट टाइटल पार्टीशन सूट नंबर 70 of 74. ठीक है, उससे अराइज करता है. हाँ. इसका पेज नंबर 32 में आइए. That has been annexed as an extra key to my counter. वे टाइटल सूट नंबर इतना में क्या है? ये बिंदु पर एडॉप्शन के बिंदु पर सर्वोच्च जज के निर्णय से भिन्न निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए स्वतंत्र एवं सक्षम थे. सबऑर्डिनेट जज. हाँ, वही तो केस नंबर तो वही है ना. जी जी. In this, one of the plea is that finding in the title suit is not binding Yes. because they are not party in the title suit. But my submission is that since there are several respondents in this rate application, and practically 5 or 6 persons have died, how a favorable order or against them can be passed? Final order cannot be passed against them at this stage. The better recourse would be let him take blood action after final adjudication of the second appeal. हाँ, 346 वाले में टाइटल सूट नंबर 346 वाले में petitioner was not a party. This Wo- petitioner was not a party. Not a party. There was planned a series of litigation in between the parties, which your lordship will get from the counter evidence. Like,
have two supplementary affidavits wrongly stated as supplementary affidavit. It ought to have been supplementary counter affidavit. Filed on January 2008 and 28/9/2010. What was the order of the settlement officer? Annexure 1. Annexure 1 is the order of the commissioner. Wait, ये Annexure 2 देखा यूनिवर्सिटी एसओ एस पे उनका Annexure 2 एट पे रेटिंग Where is the order of the settlement officer? Where is the initial order, first order? No, that is Annexure 2 Miller, Page number? at page 33. Dated 29/5. This is the appeal. ये अपील ये तो अपील है. ओरिजिनल ऑर्डर कहाँ है आपका? ये ऑब्जेक्शन Annexure 3 है एट पेज 46. Not original. It all started with the assistant settlement officer's order. Where is the order? Where is the assistant settlement officer's No, order? I'm just- ASO का ऑर्डर जो है पेज 46 से 75 तक असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर डेटेड ऑर्डर डेटेड 13/10/82. पेज नंबर कहाँ से बताएं? पेज 46 Annexure 3. ये तो सिर्फ फोटो कॉपी है सर. ये टाइप कॉपी फोटो कॉपी कहाँ है इसका? ये तो खाली प्रमाणित प्रतिलिपि है. टाइप कॉपी करके आप फाइल कर दी. टाइप कॉपी तो इस टाइप कॉपी का क्या ऑथेंटिसिटी है? मतलब आप लोग देते थे नहीं एफिडेविट पर तो देते हैं, लेकिन इसका कॉपी नहीं है, सर्टिफाइड कॉपी नहीं है. और कितना आपका एरर होता है एफिडेविट पर हम लोग जानते नहीं क्या? मिलाते हैं क्या आप लोग? True market.
सारा कहानी तो टाइटल सूट 70 of 74 का ही इस ऑर्डर में, हमेशा कहानी सारा कहानी उसी का है. Title suit 70. So ultimately the right of the respective parties will be guided by the final judgment whenever it attains finality. वो तो सुप्रीम कोर्ट से पहले तो निपटेगा नहीं कहानी, क्योंकि अभी एपेलेट कोर्ट में डिसाइड होगा, फिर आप एक बार और सेकेंड अपील पार्टी करेगा कोई भी जिसको करना होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा. तो whatever the rights and liabilities of the parties is to be decided by the legality and validity of adoption, which is subject matter of title suit number 70 of 74, now pending before the first appellate court by virtue of the order passed by this court. Therefore, this writ petition क्यों survive करेगा? तो बताइए, why should this writ petition survive? क्यों मैडम इसमें इतना बल खाली कर दिया जाए मैडम कि सिविल सूट वहाँ चल रहा है, तो it should be in abeyance मैडम. Which should Till be in a final abeyance. decision is उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है ना. He may be allowed to take a step after final decision. Yes. हाँ वही लिखा दिया उस मैडम. That will suffice. Yes, हाँ ये दोनों हम तो बोल ही रहे हैं. दोनों के लिए यही दिखा देते हैं कि टाइटल सूट में जो भी ये जो आप ऑर्डर बोल रहे हैं ना, जी हाँ. सेकेंड अपील 204 of 2007, तो यही लिखा देते हैं that the impugned orders are directly are going to be affected by this order. between same parties same issues are मैडम. आपसे पूछ रहे हैं, आपको यहाँ हमको ज्यादा कोई पढ़ नहीं, हमको कोई इतराज नहीं आपके है. जूनियर से पूछ रहे नहीं, हैं. हमको कह रहे हैं. And it will be binding on all the parties. He may be. हम यहाँ से कैसे डिसाइड करेंगे नहीं नहीं, बाइंडिंग होगा कि नहीं होगा वो अभी कैसे डिसाइड. फाइनलिटी तो अभी हुआ नहीं है. उसके बाद दूसरा विक्टिम बिफोर दिस कोर्ट. मेरा तो सबमिशन था कि ये डिसीजन विथड्रॉ कर लें to take a step in accordance with law whenever his right will be finalized or as a document. टाइटल सूट पूरी है, टाइटल अपील हम देते हैं. सेकेंड अपील में यही आए थे रामधारी भगत. मैटर वॉज रिमांडेड ताकि इस फ्यूचर में केपी रहते हैं. यस, ठीक है, यही दिखा देते हैं सर. रामधारी भगत तो पार्टी बन जाएंगे ना वहाँ पर अपील में. अब तो बन गया अब तो अपडेट स्टेज में बन गया. बट एट द जजमेंट, एट द स्टेज ऑफ जजमेंट. That's right, whatever be it. Yes. Whatever be it, अब उनको He is अपना now जो party. करना होगा अपना करेंगे. He is now party in second appeal. He is now party in second appeal. The petitioner is a party in. He was the appellant over here. Yes. Appellant थे ना second appeal. Again- जो इसका जब party position Again, है. reversal ही है. Just second appeal number 204 of 2000. पार्टी अरे भैया, जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक नहीं, कुछ वही वही नहीं. appear वही सेकेंड अपील नंबर 204 of 2007 का पार्टी पोजीशन दीजिए, तब तक हम लिखते हैं. For the learned counsel appearing on behalf of the parties, this writ petition has been filed for the following relief. The learned counsel for the appellant has submitted that the matter revolves around legality and validity of adoption of Ramdhani Bhagat Bhagat by Har Narayan Bhagat. by Harnarayan Bhagat. He submits that the point was subject matter of consideration in title suit number 70 of 1974, which travelled up to second appeal number 204 of 2007, and the matter has been remanded to the learned first appellate court by order dated 27/1/2026. The learned counsel has also submitted that the
appeal, first second appeal was filed by Ramdhani Bhagat, who is the appellant before this, who is the writ petitioner even before this court. The learned counsels have jointly submitted that ultimately the issue arising in this case will also get settled once the point regarding adoption of the present petitioner by her Narayan Bhagat is settled. The councils jointly submit that there is no point keeping this petition pending. It may be observed that the parties may take appropriate steps depending upon the final outcome of the matter regarding adoption, which is now pending before the first appellate court. Itna ho jayega, sir? No. Considering the submissions and with the consent of the learned counsel for the parties, this writ petition is disposed of, observing that the parties would be ultimately governed by observing that the parties may take appropriate steps once the matter regarding adoption of the petitioner is ultimately settled in the proceedings which is arising out of title suit number 70 of 1974 and is now pending before the first appellate court. That's all. याद आ गया याद कैसे नहीं आ गया इतना मेहनत करके सब The circumstance peculiar था. The substitution matter was kept in abeyance. When the father died, he was substituted. That's right. Along with his another brother. वो हमको याद है. अब देखिए बस ऑर्डर करेक्शन करने में बहुत टाइम लगता है हमको. सब चीज इम्प्यूग्ड ऑर्डर्स में इतना एरर रहता है ना, कभी डेट का एरर रहेगा, नाम का एरर रहेगा, एग्जिबिट नंबर का एरर रहेगा, सब टैली करते करते इट टेक्स क्वाइट सम टाइम. बहुत पेशेंस जज को भी एक नॉर्मली Under heading for hearing item 5, CWJC 4434 of 2000. Please allow us. This matter relates to the 71A of the CNC and the surrendered unit and the extra land. In this case, lawsuit, Mr. Vishal Kumar Kumar in this matter. And This is not a ground for adjournment. yes, Lord. There is a direction for restoration of land. Yes, Lord. No. Yes, Lord. Finally, the third annexed. Yes. What is the date of disposition? No, I am a favored owner. I am a Khatyan holder. I am not experienced. The private रिविजन केस है 86 का. SAR केस कब का है? SAR 1971 in the 71 से चल रहा है. 79 objection was filed by the private respondent under section 71A of the CNT Act. That was rejected by the SAR court, and thereafter the annexed to additional collector court, two findings against the private respondent, and thereafter the divisional jurisdiction invoking under section 217 of the CNT Act. The Commissioner South Chotanagpur Division has passed an order that was against me. When were you are for the whom are you representing? Respondents, private respondents. Okay. When were you dispossessed? What is the date of your dispossession? And what is the mode and method of dispossession? Actually, they have never been in possession of these tablets because these respondents. Then why did you file your petition under section 71A
if you were not dispossessed? No, Your Worship, they were trying to grab the property, Your Worship. That's why. उसमें तो trying to grab में तो 71A नहीं लगता है, गलती से लग गया, यही लिखा कि allow कर देंगे. When were you dispossessed? When we were dispossessed, Your Worship, I don't have the idea, Your Worship, because actually this case hasn't, my father was handling with that case, Your Worship. So? But now he is not very best to argue the case. So I'm trying level best to argue the case, Your Worship. ऐसे ट्राई करने से नहीं होगा ना, हिट एंड ट्रायल नहीं चलता ना. नहीं, इसमें ये है कि ये जो आपसे एक सवाल पूछना है, when were you dispossessed? That's a very material fact. When were you dispossessed? टाइम दिया है. दोनों जने यहाँ पे कॉमन एजेंडा लेके खड़े हैं टाइम लेने के. इसमें स्टेट आज तक नहीं कभी हुई है और कॉन्ट्रैक्ट में भी कोई जरूरत नहीं है स्टेट ऐसे ही सोचते रहता है. $64 years of dispossession. ठीक? क्या होने वाला आपके फेवर में बताइए? $64 years of dispossession. आपको भी टाइम चाहिए. With the consent of the learned counsel for the parties, post this case tomorrow to be taken up at first case at 2:15. चलिए. Item 6 CWJC 1478 of 2001. Who are you? You are the tenant, or you are the surrender was made in the 1946 year. and settlement? Subsequent settlement has been made by the external. When? Immediately? No, in the year 1947 year. By virtue of customary economic that is annexed to me. Let us see the improved order. No. That is annexure 9, the initial order, SR officer. No, it's the last order. The commissioner dismissed my revision on the point of at the stage of admission. That is the Let us see. What is it? Number 64 year. Single paragraph. Yes, yes, read it. यह मामला समाप्ता जुमला के आदेश दिनांक 14/2/2021 के विरुद्ध दायर किया गया है. आपका समाप्ता के आदेश के अवलोकन से विदित होता है कि उन्होंने उभय पक्षों को सुनकर आदेश पारित किया है. अपर समाप्ता के समक्ष प्रस्तुत कागजातों से स्पष्ट होता है कि भूमि के खतियानी दलित आदिवासी हैं और इस्तीफानामा 6700 रुपये नगद मूल्य के आधार पर भूमि से बेदखल हुए जो वास्तव में बिक्री है. इस प्रकार इस मामले में धारा 46 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन प्रतिवेदित है. भूमि बेदखल है, छपरबंदी नहीं है, बनी परिस्थिति में इस आवेदन में कोई निरीख न होने के कारण The petition was filed under section 71A. The SAR case was filed in year 1980-81. The initial SAR case has been dismissed on 10/1/1983. Again, the appeal has been referred. The appellate court has demanded the matter back, and the subsequent order has been passed by the DCLR Dumla by terms of order dated 10/4/2000 regarding restoration of the land. That is at Annexure 9, Your Honor. Where is the order of remand? That is not on the order. It's the order statement I have.
Where is the subsequent order? No. Annexion 9. Annexion 9. On what ground has he restored the land? On what ground has he restored the land? ऑपरेटिव पार्ट में पढ़ देते हैं। पढ़िए। उपयुक्त तथ्यों के आलोक में छोटा नागपुर आबकारी अधिनियम की धारा 71 के अंतर्गत कथित भूमि नहीं, उसके ऊपर से पढ़िए, 2 पैराग्राफ। अभिलेख के आदेश फलक। अभिलेख के आदेश फलक दिनांक 25/2/1993 तथा 4/93 से ज्ञात होता है कि प्रतिवादी रामदेव साहू की मृत्यु के बाद उनके लड़के दिनेश प्रताप साहू को पक्षकार बनाया गया था। द्वितीय पक्ष कई बार जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, परंतु वे कथित भूमि से संबंधित किसी प्रकार का सबूत पेश करने में असमर्थ रहे। प्रतिवादी काफी दिनों से लगातार अनुपस्थित है। ऐसा प्रतीत होता है कि विवादित भूमि से संबंधित उनके पास कोई कागजात नहीं है। अंचल अधिकारी गुमला के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि वारदात भूमि हथियार में टूपा बैगा खड़िया व दूसरा बैगा खड़िया वगैरह के नाम से दर्ज है। वादी ननकी बैगिन खतियानी रैयत के वंशज है या आदिवासी खाते की भूमि है। प्रतिवादी गैर आदिवासी प्रतिवादी ने गलत तरीके से कथित भूमि पर जमाबंदी कायम कराकर दखलकार है। फलस्वरूप छोटा नागपुर आबकारी अधिनियम की धारा 49 तथा 46 का स्पष्ट उल्लंघन हुआ। उपयुक्त तथ्यों के आलोक से में छोटा नागपुर आबकारी अधिनियम की धारा 71 के अंतर्गत कथित भूमि प्रथम पक्ष को वापस करनी योग्य, इसलिए अंचल अधिकारी गुमला को आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी श्रीमती कलिसिया देवी, जैसे सुखदेव साहू साकिन गुमला को वारदात प्लॉट 1524 रकबा 6 1/4 डिसमिल तथा रामदेव साहू बग अनुठी शाह को प्लॉट 1524 रकबा 5 3/4 से उन्हें अथवा उनके वारिसान को 1 माह के बाद बेदखल कब्जा दिलाकर अनुपालन प्रतिवेदन निश्चित रूप से प्रस्तुत करें। आप तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं प्रोड्यूस किए तो क्या ही होगा? You did not produce anything. They were registered surrender of the year 1946 your lordship. And subsequent by way of customary hukumnama, land was transferred in favor of the Mrityunjay Nand, and in the family arrangement that property was come within the possession of the legal Registered surrender की कहानी कहाँ लिखी है? Where is it mentioned? Appellate court order में उधर देखते हैं जैसे ठीक है। at page number 57 here also. 57. ये बात बस बोल दिए हैं कि रजिस्टर्ड सरेंडर में कंसिडरेशन अमाउंट लिखा हुआ है, तो दैट विल नॉट बी अमाउंट टू द सरेंडर, दैट विल कंसीडर एज ए ट्रांसफर अंडर सेक्शन अर्लियर वायलेशन ऑफ सेक्शन 46। यही बात बोलते हुए उनके हमारे So the Rayyat was dispossessed in 1946. 1946 lordship. And DSR case was filed in the 1981 after lapse of about more than 35 years. Yes, sir. Are you there for the private party? Actually, in this case, lordship may kindly see, in 1946, actually he has been disposed in 1980. I don't think From where do I get this? that is mentioned that. Where is it? Yes, kindly Where see. is it? Where is the finding that he has been dispossessed in 1980? Yes, that is the finding of the court. In spite of surrender. Surrender, tell you what happened. Surrender, it is not in fact surrender because it was sale. Now, in my humble submission, when the land was taken by. Even if it is surrender or it is sale, there is no doubt that it is transfer. Yes. But 1980, he has been disposed. Physical dispossession is another thing. And there is a registered document executed by him, by the recorded Rayyat. There is a registered document executed by him, the so-called surrender or sale, whatever it is. He divested himself of his right by a registered document. I was in my humble submission, there was the date of dispossession. Lordship may kindly give this order passed by the appellate court. In my humble submission, I may kindly be permitted to bring down. Kindly see my term. Page number 61 is Lordship may kindly. 61. internal page 5 of the update. 61. That is Lordship may kindly see my term. Page number, inner page 3 of the order, passed by the appellate. Inner page 3. Inner page 3.
Yes. 90C विवादित भूमि मधुसूदन नंद के हिस्से में पड़ा, टॉप से पढ़ रहे हैं। यह निबंधित बंटवारा दिनांक 21/2/50 को बंटवारा में विवादित भूखंड के प्राप्त के उपरांत मधुसूदन नंद ने प्लॉट संख्या 1524 रकबा 12.5 डिसमिल निबंधित बिक्री दस्तावेज संख्या 1266/66 दिनांक 18/5/66 को द्वारा रामदेव साहू को भेज दिया। जमीन की खरीदगी के पश्चात रामदेव साहू ने अंचल कार्यालय गुमला में अपने नाम से नामांतरण करा लिया तथा लगान देना प्रारंभ कर दिया। रामदेव साहू ने खरीदगी भूमि में से 6.5 डिसमिल जमीन बिक्री दस्तावेज संख्या 868 दिनांक 21/4/80 में के द्वारा कलसिया देवी पति सुखदेव साहू को भेज दी। कलसिया देवी ने भी खरीदगी के पश्चात अपना नामांकन करा लिया तथा अंचल कार्यालय में गुमला में नगर पालिका होल्डिंग टैक्स देना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार रामदेव साहू के द्वारा बेचने के उपरांत 6.5 डिसमिल जमीन बचना चाहिए था, परंतु मात्र 5.25 एकड़ जमीन पर एशियार वाद प्रदान किया गया। रामदेव साहू ने खरीदने वाली विक्रेता कलसिया देवी एशियार वाद संख्या में अपील करता है तथा शेष बची जमीन में एशियार अपील संख्या 5 में रामदेव साहू दिनेश साहू अपील करता है। बताया गया कि दोनों अपीलकर्ता भूखंड पर अपना आवासीय बनाकर रह रहे हैं। उनके जमाबंदी कार्य में लगातार लगान भुगतान करते आ रहे हैं। उन्होंने नागपुर काउंसिल के प्रधान को नहीं किया है। Then kindly see whether with regard to the disposition and finding of disposition in the next page 5, inner page 5. इससे रुपये लेकर किया, इससे स्पष्ट है कि यह इस्तीफा नहीं बल्कि बिक्री है। ठाकुर का सभी अधिनियम के 40 के बचने के लिए इस विक्रयनामा को धारा 72 के अंतर्गत इस्तीफा का रूप दिया गया है। इसे वैध इस्तीफा नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि स्पष्ट रूप से आदिवासी खाता भूमि को गैर आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को दिया गया है जो कि ठाकुर खास करने अधिनियम का उल्लंघन है। सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि यह बात काल बाधित नहीं है क्योंकि शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट 1969 का इसका रेट्रोस्पेक्टिव 30 इयर्स पीछे से है। वर्ष 80 में इस भूमि का विवाद चला रहा। विवादित भूखंड को खरीदगी के 80 में की गई है। अतः अपीलकर्ता का यह दावा कि काल बाधित है यह गलत है क्योंकि इस मामले में किसी भी पक्ष का एडवर्स पोजीशन विगत 30 वर्षों का प्रमाणित नहीं होता है। अधिवक्ता ने पुनः बताया कि विवादित भूखंड पर निर्मित संरचना 1969 के बाद की है तथा अवैध है। सरकारी अधिवक्ता बताया कि सर एक बात बताइए, in a case where there is a surrender, settlement, sale, whatever, in the year 1946, and then there are subsequent sale deeds. The last sale deed is of the year 1980. तो वहां से लिमिटेशन काउंट होगा सर। व्हाट इज द डेट ऑफ डिस्पोजेशन? जो एप्लीकेंट होता है उसका पहला जो फॉर्म है ना, उसमें वन ऑफ द कॉलम इज डेट ऑफ डिस्पोजेशन एंड द मोड ऑफ डिस्पोजेशन। व्हाट इज द डेट ऑफ डिस्पोजेशन? योर डेट ऑफ डिस्पोजेशन इज एप्रेंट फ्रॉम पैराग्राफ इंटरनल पेज 2। अब देखिए इंटरनल पेज 2 में आप क्या बोले, आपका केस क्या है इंटरनल पेज 2? अपीलकर्ता का कथन है, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड, वो एक बात बताइए, ये आपका जो एप्लीकेशन है वो एसएआर ऑफिसर के ऑर्डर में होगा, राइट? एसएआर ऑफिसर का ऑर्डर कौन सा है? एनेक्शन 9 इज ऑर्डर ऑफ एसएआर ऑफिसर। हाँ चलिए इसको जरा पढ़िए तो सर, आप पढ़िए ना सर को क्यों तंग करें आप। या बात भूमि वापसी हेतु अंचलाधिकारी गुमला के द्वारा वर्ष 1980 में अनुमोदन, ये आफ्टर रिमांड है, या आफ्टर रिमांड है। पहला ओरिजिनल ऑर्डर सेक्शन 8 में ऑर्डर डेटेड 10/1/1983
आमिलात प्रतिवेदन प्राप्त है, दोनों पक्ष अनुपस्थित हैं, अतः बिना गुण दोष विवेचन के प्रथम पक्ष का दावा dismissed, simpliciter dismissed. हाँ पढ़िए जरा, यही मेन ऑर्डर है बेसिकली, पढ़िए। यह बात भूमि वापसी हेतु अंचल अधिकारी गुमला के द्वारा वर्ष 1980 में अनुमंडल पदाधिकारी गुमला के न्यायालय में दफा 71 के अंतर्गत दायर किया गया था। वादगत भूमि मंडल गुमला के खाता संख्या 33 प्लॉट नंबर 1524 रकबा 12 डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। अंचल अधिकारी ने यह बात वादनी ननकी बैगे पति रिटर्न बैंगा ग्राम गुमला थाना गुमला की ओर से प्रतिवादी श्रीमती कलिसिया देवी पति सुखदेव साहब तथा श्री रामदेव साहब वर्ग अनुपी साहब साकिन गुमला के विरुद्ध दरबा क्रमशः 6/4 डिस्मिल तथा 3/4 डिस्मिल के लिए दायर किया है। अपर मकान बनाकर जमीन कब्जा किया है, अपर मकान बनाकर जमीन कब्जा किया है, अंतिम पदाधिकारी से भूमि वापसी का अनुशंसा किया है। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पूर्व में पक्षों की अनुपस्थिति के कारण तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी गुमला ने दिनांक 10/1/1983 को बिना गुण दोष पर विचार के प्रथम पक्ष के दावा को अस्वीकृत कर दिया, लेकिन बाद में विशेष सरकारी अधिवक्ता ने उक्त फैसला के विरुद्ध अपर समर्थक गुमला के न्यायालय में अपील दायर किया। माननीय अपर समर्थक गुमला ने गुण दोष के आधार पर इस बात में निष्पादन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी गुमला को वापस कर दिया, जो आदेश फलक पर अंकित है। इस आविर्भाव 163/92 था। तो आदेश के बाद यह अभिलेख उपायुक्त गुमला के निर्देशानुसार अपर समाहर्ता गुमला के पत्रांक 541 दिनांक 27/5/92 द्वारा निष्पादन हेतु वापस आया। अभिलेख के आदेश फलक दिनांक 25/2/93 तथा 4/6/93 से ज्ञात होता है कि प्रतिवादी रामदेव साहू की मृत्यु के बाद उनके लड़के दिनेश साहू को पक्षकार बनाया गया था। द्वितीय पक्ष कई बार जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, परंतु वे कथित भूमि से संबंधित किसी प्रकार का सबूत पेश करने में असमर्थ रहे। प्रतिवादी इधर काफी दिनों से लगातार अनुपस्थित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विवादित भूमि से संबंधित उनके पास कोई कागजात नहीं है। अंचलाधिकारी गुमला के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि वादगत भूमि खलियान में कुपा बैगा खड़िया व दूसरा बैगा खड़िया वगैरह के नाम पर दर्ज है। वादी ननकी बैगिन खतियानी रैयत के वंशज हैं। यह आदिवासी खाते की भूमि है। प्रतिवादी गैर आदिवासी है। प्रतिवादी ने गलत तरीके से कथित भूमि को जमाबंदी कायम कराकर दखल का डेट ऑफ पोजेशन डिस्पोजिशन के बारे में कोई जिक्र नहीं है। एंड appellate authority annexure 10 पेज 57 इसमें हमारा पूरा केस डील किया गया। अच्छा, इसमें आपका केस डील किया गया है, ये इस्तीफा और ये जो उसके बाद ये सारा केस डील तो आपने किया, तो आपका सबमिशन है। फाइंडिंग में क्या दिया हुआ है? फाइंडिंग में फाइंडिंग ये उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, ठीक है, पेज 5 में। फाइंडिंग में यही बात होती है। ये पढ़िए, नेक्स्ट पेज पढ़िए। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा प्रस्तुत कागजातों का अवलोकन करने से निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं। विवादी भूखंड आदिवासी खाता की भूमि है तथा उत्तरवादी खतियानी रैयत के वारिस है। खतियानी रैयत जिस निबंधित इस्तीफानामा के आधार पर विवादित भूमि से बेदखल हुए, उस इस्तीफानामा को 6700 रुपए नगद मूल्य देकर हासिल किया गया। इस आशय को प्रविष्ट इस्तीफानामा के मजमून में लिखा हुआ है तथा यह भी लिखा हुआ है कि पैसे की जरूरत के कारण 6700 रुपीज लेकर इस्तीफा किया जा रहा है। इस प्रकार यह इस्तीफा वस्तुतः बिक्री है। छोटा नागपुर प्राप्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों का उल्लंघन कर इस बिक्री को इस्तीफा का रूप दिया गया है। अपीलकर्ता जन गैर आदिवासी समुदाय के सदस्य है, जबकि विवादित भूमि आदिवासी खाता की भूमि है। विवादित भूखंड सर, डेट ऑफ डिस्पोजिशन तो 1946 ही, इवन एज पर दिस date of disposition, if fellows will take into consideration the surrender, fellows say 1946, but in my humble submission, actually disposition, whereas from the date of execution of the sale deed is 1980. No, sir. That mentioned. Sir, this particular order, it says that it is a sale deed because there is a consideration. Merely because deed of surrender is mentioned, that is not sufficient. Since there is a consideration mentioned, therefore it is a sale deed. Yes. Correct? If it is a sale deed, then the transfer had taken place in 1946. Even by surrender, the transfer has taken place in 1946.
then under such circumstances. In my humble submission, the surrender 1946. Let us assume that it is 1946. But actual dispossession, let me mention in the order passed by the appellate court. Where is the date of actual disposition? 1980. 1980 is, you see, Mention. sir, after this surrender, there has been multiple deeds with respect to the same property. And ultimately, the person against whom you had filed a case had purchased it by way of registered deed of the year 1980. Merely because the last purchaser has purchased it by way of sale deed of 1980, हर एक आदमी जब खरीदेगा तो डेट ऑफ डिस्पोजेशन नहीं चेंज होता चला जाएगा ना. The date of disposition will be the initial date of disposition, that is of the year 1946. Yes. There is inner page number 3. There is date of disposition is mentioned. There is inner page number 3. When he has disposed, kindly see where in the middle. दस्तावेज संख्या 868 दिनांक 21/4/80 द्वारा रामदेव साहू ने गेट भेज दिए. रामदेव सर खेती के लिए भूमि नहीं एक सेकंड, हम इसको पढ़ते हैं. दस्तावेज संख्या 868, आप पढ़िए इसको ठीक से. दस्तावेज संख्या 868 दिनांक 21/4/1980 के द्वारा कलिसिया देवी पति सुखदेव साहू को बेच दिया गया. कलिसिया देवी ने भी खरीदी के पश्चात अपना नामांकन करा दिया तथा अंचल कार्यालय गुमला एवं गुमला नगर पालिका में लगान तथा होल्डिंग टैक्स देना प्रारंभ कर दिया. उसके पहले कितने सारे सेल डीड्स का रेफरेंस है? 66 में. हम सिर्फ 80 का सेल डीड से तो नहीं शुरू करेंगे ना सर. उसके पहले so many सेल डीड्स हैव बीन रेफर्ड. 1980 के पहले हम पोजीशन में थे. ये कहाँ से हम बोलेंगे? क्योंकि देर आर रिपीटेड सेल डीड्स विद यू जस्ट सी. नहीं, विवादित भूमि मधुसूदन नंद के हिस्से में पड़ा. यह निबंधित बंटवारा दिनांक 21/2/1950 को हुआ. बंटवारा में विवादित भूमि के प्राप्त करने के उपरांत मधुसूदन नंद ने प्लॉट संख्या इतना एकड़ इतना को रामदेव साहू को बेच दिया. 1966 में उन्होंने ट्रांसफर किया. ठीक है, 1946 के बाद 1966 में एक ट्रांसफर का डॉक्यूमेंट आया. एंड देन after that there is a subsequent transfer in 1980. Yes. And by submission, minus 9%. The glossary may kindly prove the application for restoration filed by petition by the respondent. कहाँ है बताइए, कहाँ लगा? रिकॉर्ड में आया होगा उसमें. kindly see मैडम. रिकॉर्ड आया क्या? रिकॉर्ड नहीं आया. One more thing I would like to draw your attention, that is Annexure 7. इसी प्लॉट पे एक और भी केस किया गया था, दर्द इसमें जमीन का. वो एसआर प्रोसीडिंग ड्रॉप हो गया. नाउ टेनेंट में कभी कोई अपील फाइल किया ना ही रिवीजन किया. दैट इज Annexure 7. ननकी वैली ने ही फाइल किया था. अदिति दया प्रसाद एंड अदर्स के प्लॉट नंबर सेम. वो जो 5.5 and 6.5 वाला जो नहीं, एरिया अलग है. हाँ, एरिया अलग. एरिया 10 डेसिमल है, पार्टीज अलग. ननकी वैली जो इनके रिकॉर्डेड टेनेंट है, that's the Annexure 7 also. With respect to the same property? No. With respect to different same plot. Same plot but different property. Recorded with the common person. क्योंकि सरेंडर हुआ था प्लॉट नंबर 1524 और प्लॉट नंबर 1018 का टोटली.
फाइंडिंग में भी 1980 से डिस्पोजेशन का बात नहीं बोला गया है। वर्ष 1980 से इस भूमि पर विवाद चला है, ये कहते हैं। डेट ऑफ डिस्पोजेशन वो क्यों नहीं किया? They are disposed in year 1946. और रेस्टोरेशन का ऑर्डर एपेलेट कोर्ट ने आपके अगेंस्ट में किया मेरा भी। और रिवीजन एडमिशन स्टेज पे हमारा डिस्मिस। रिवीजन आपका एडमिशन स्टेज में डिस्मिस। बताइए सर, 30 इयर्स का कहानी से आप कैसे बांधे? अगर उसको 1946 लेके चला जाएगा तब तो हमारा केस नहीं होता। 1946 ही लेना पड़ेगा ना सर। लेकिन अगर 1980 लिया जाएगा, 1980 कैसे लेंगे? शो मी समथिंग कि 1980 लेना पड़ेगा। 1980 then it was and Kalsiya Devi came in position in 1980. ये चीज आप Kaleshia Devi might have come in possession in 1980, but she is purchasing it from a person who came in possession earlier in the year 1966 by virtue of a registered sale deed. And then it is your case, it's a registered document by which you say sold or surrendered the property in the year 1946. Then after 30 years you can do it. So that is true, but in my थोड़ा सा दिक्कत है सर। देखिए ठीक है, we are absolutely for the tribals, there is no doubt on that. Otherwise also we scrutinize the records very hard when it comes to the rights of the tribals. But we have to go by the law also. सीतू साहू सब ने बोल दिया है कि आपको जब मन होगा तब आप खड़े होकर नहीं बोल सकते हैं ये मेरा जमीन है। There is a limit to it ना, people change their position. disposition हमारा केस है 1980. सर आप कोई मटेरियल दिखाइए that you were dispossessed only in the year 1980. From the application which was filed. It is not there sir, आपके पास है तो दिखाइए डेट ऑफ डिस्पोजेशन। और ऐसा कोई फाइंडिंग नहीं है। एपेलेट कोर्ट ने जिसने आपके फेवर में होल्ड किया है सर, उसने भी नहीं लिखा है कि यू हैव बीन डिस्पोजेस्ड इन 1980। वाद चल रहा है 1980। वाद चल रहा है वो तो आपने केस कभी भी फाइल करेंगे ना। अगर वाद आपका 1950 से चल रहा होता तो इनका ये 30 इयर्स वाला प्ली नहीं लेते हम लोग। तो एप्लीकेशन नहीं है। छोटे जैसा सीतू साउंड लेके आए हैं कि नहीं लाए? दीजिए। हाँ ढेर सारा है सर। आप कितना बार आप साइट करते हैं? आपको तो दोनों तरफ से अपीयर होना है। इसमें से जरा बताइए कहाँ पर है? Three cases of the Supreme Court. Justice Court has said 40 years. And time has been specified. 30, more than 30 years. 40 years नहीं लिखे हैं। नहीं लिखा हुआ देखा जाएगा जब अंदर ब्लॉक सिटू साहू और फुलटन मुंडा केस। 40 if the application for restoration is filed beyond 40 years, then that is application should not be taken. Specify किया हुआ। इसमें हम लोग का 34 सर कोई लिमिटेशन कोर्ट ने नहीं, कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है इट हैज बीन फाइल्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 40 इयर्स, लेकिन ऐसा नहीं होल्ड किया है कि 40 साल से लिमिटेशन कोर्ट उसको ले डाउन कर रहा है। इट इज नॉट लाइक Supreme Court at the 40 year is not a really good time.
Reasonable हाँ time. reasonable time 35 years is not a reasonable time. हाँ और 30 years वाला भी बहुत है 30 years का ऑनरेबल जस्टिस एसबी सिन्हा कोई जजमेंट लाए नहीं है, उसमें भी 30 years का है। तो भाई कल आप हमको सारा जजमेंट दे दीजिएगा, ऑर्डर हम लिखा जी देंगे। कर देते हैं। ठीक है सर। जी 30 years के नहीं लिए कल रख नहीं रहे कल अभी बिना नहीं। जजमेंट ठीक है कल ही सर। दिखा जाएगा। ठीक There is judgment of your lordship also in my हाँ, several cases, not सर one. ही अपीयर किए हैं, जो हम उस केस में हम अपीयर बोल दीजिए। सर एक आखिर देयर हैज टू बी सम क्वाइटस टू लैंड लिटिगेशन। जब मन होगा तब आके ठीक है लिबर्टी रहता है। हम एप्लीकेशन भी देख लेते हैं, अगर उसमें लिखा हुआ होगा 40 में हम डिस्पोजेस हो गए तब सिविल ऐसा मैटर में कुछ- सर अपीयर किए तो जजमेंट दे। सर ही अपीयर किए हम अपीयर। देयर हैज टू बी सम क्वाइटस। Yes, ऐसे तो बहुत मुश्किल है। सर आप बैठिए, हम लिखाएंगे इसको। देखिए CWDC number 1478 of 2001 for the learned counsels appearing on behalf of the parties. This writ petition has been filed for the following relief. The learned counsel for the petitioner has submitted that the the matter relates to Khata number 33, including plot number 1524 and 1018 in village Kumla, which was recorded in Revisional Survey Record of Rights in the name of Thupa Bagia, son of Risa Bagia, within bracket Khadia, Rati Bagia, within bracket Khadia, and Pujara Bagia, within bracket Khadia, son of Mahali Bagia. The recorded Rayyat surrendered the land of plot number 1524 area 0.76 acres and plot number 1018 area 0.99 acres, total 1.75 acres of Khata number 33 under Khebat number 3 to the then landlord, namely Bari Devendra Singh, through registered deed of surrender dated 10/6/1946 and put the landlord in possession. after taking money, Yes, I'll just come here. From the date of surrender, and so the surrender became the Bakas land of the then landlord. It was further case of the petitioner. The learned counsel for the petitioner further submitted that the then landlord orally settled 0.12.5 decimal of land out of RS plot number 1524 of Khata number 33 of said village, coupled with grant of Chaprabandi rent receipt and delivery of possession followed by customary Hukumnama dated 8/1/1974 in favor of Mrityunjay Nand, son of Loknath Nand, and put the settlee in possession of the same, and the settlee came in possession from the date of settlement. Prior to taking settlement of the land, settlee had executed kabuliyat in favor of the then landlord. It was further case that there was a family partition and by a registered deed dated 21/2/1950, and the property involved in the present case fell in the share of Mrityunjay Nand. Madhusudan Nand. And thereafter Madhusudan Nand, on account of legal necessity, sold 12.5 decimal of his Chaparvandi land in favor of Ramdev Sahu by virtue of registered deed dated 18/5/1966 and put him in possession.
who then got his name mutated in the circle office, and Ramdev Sahu, on account of legal necessity, sold 6 1/4 decimal of land to the petitioner by registered sale deed dated 21/4/1980 for a valuable consideration, and put the petitioner in possession. The learned counsel submits that the property involved in this case is 6 1/4 decimal of land covered by registered sale deed dated 21/4/1980. Correct? He submits that after purchase, the land was mutated छप्परबंदी रेंट हुआ था and छप्परबंदी rent was fixed, and ultimately a house has been constructed over the property, and the petitioner has also got her name mutated in Gumla municipality and is paying taxes. The learned counsel has submitted that the recorded tenant had surrendered the land by way of registered deed way back in the year 1946. Which passed several hands, and after expiry of more than 54 years from the date of surrender, an application seeking restoration of 10 decimal of land against Gaya Prasad Sao and others was filed, which was numbered as SAR case number 354 of 1980-81. इसमें आपका property भी included था? Same plot he submits that the same property in connection with Gaya Prasad Sao was arising out of the same plot number, same khata and same plot number, and the same applicant as is involved in the present case. He submits that so far as the present case is concerned, the private respondent initiated a petition, filed a petition under section 71 capital A for restoration of land which was numbered as SAR case number 249 of 1980-81. And another case was filed by the private respondent with respect to 5.5 decimal of land out of the same plot against one Ramdev Sahu, which was registered as SAR case number 262 of 1982-83. The learned counsel submits that the present case is arising out of SAR case number 249 of 1980-81 with respect to the property which was purchased by the petitioner. He submits that initially the SAR case was dismissed. The appeal was also and before the first appellate court, the matter was remanded. Thereafter, the SAR case was again taken up, and the prayer for restoration was allowed. Against the same, the appellate court dismissed the appeal, and the learned revision court, by the impugned order,
passed in Bumla SAR case number 18 of 2001 dismissed the division. The Learned Council has submitted that the learned authorities have not taken into consideration the Learned Council has submitted that the learned authorities have not taken into consideration the fact that the recorded tenant was dispossessed by virtue of the registered document as back as in the year 1946. He submits that since there was a amount of consideration involved in the deed of surrender, the authorities have taken it as a sale deed, but the same makes no difference. What is important is that the recorded tenant was dispossessed in the year 1946. Surrender is not amount to be transferred. नहीं, उससे नहीं चलेगा. The Learned Council has submitted that in view of the fact that the recorded tenant was dispossessed way back in 1946, the petition for restoration filed in the year 1982-83. क्या नंबर है? SAR केस नंबर 249 of 1980-81. 249 of 1980-81 was itself suffering from unexplained delay and latches on the part of the recorded tenant, and this aspect of the matter has not been properly considered by the authorities. The Learned Council has relied upon the judgment passed by the Honorable Supreme Court reported in the case of Situ Sahu, reported in judgments दे दीजिएगा भाई 3-4-5 judgments है इसमें है ना जयमंगल ओरांव सीतू साहू एट फूलचंद साइटेशन कल दे देंगे हम फोटो कॉपी दे देंगे सबका. The Learned Council has submitted that in the aforesaid facts and circumstances, the order for restoration of land is in the teeth of the settled position of law by none less than the Honorable Supreme Court, and the application for restoration having been filed beyond after 54 years from the date of dispossession was itself not meet. 35 होगा क्या? 54 नहीं होगा, 35 years लिखिए. हाँ. The Learned Council for the respondents, on the other hand, private respondent has opposed the prayer and has submitted that since the petitioner had purchased the property by virtue of registered deed of the year 1980 and the application was filed immediately thereafter, in such circumstances, the judgments which has been relied upon by the Learned Council for the petitioner is not applicable. यही आपका कहना? यही आपका कहना 1980 में खरीदे हैं? In my humble submission, forceful disposition will also come into the meaning of law. Now, forceful disposition was in 1980, not right. That is my case. Further, my case is, in my humble submission, in all those three cases, Kunchal Gunda, the Apex Court has said 50 years is not a reasonable time to file application for restoration. C2 some case, the Apex Court has said that of 40 years not a reasonable time for exercise of powers in the now, then, Jaymangal case, all these judgments of the Apex Court has said 40 years of surrender itself sufficient to make appellant is entitled to pay 40 years. And not that 34 years. So, my case in my humble submission can be distinguished from all these three cases. The Learned Council for the private respondent has tried to distinguish all the three judgments and has submitted that in the case of Jaymangal Oraon, the period of dispossession was 40 years
In the case of Situ Sahu, the period of dispossession was 35 years, and in case of Fulchand Munda, the period of dispossession was 50 years. And in the present case, the period of dispossession is about 35 years. From the date of surrender. From the date of surrender. Surrender. But disposition, my case is the finding of capital code 1980. The Learned Council has submitted that the recorded tenant were dispossessed in the year 1980. 80. So that is within time. And therefore the petition was filed within time. Within 30 years. Within 30 years. After hearing the Learned Council appearing on behalf of the parties and considering the facts and circumstances of this case, this court finds from the records of this case that it is not in dispute that registered deed of surrender was executed by the recorded tenant on 10/6/1946 in favor of the zamindar, which was followed by further transfers said to have been done by the deed landlord, which included registered sale deeds as mentioned by the Learned Council for the petitioner. It is further apparent that the Learned First Appellate Court has questioned the surrender deed by observing that the same contained a consideration amount of rupees 6,700 and therefore the deed of surrender was a sale deed. The Learned Commissioner, while passing the impugned order, has also referred to the deed of surrender and has recorded that the recorded tenant was dispossessed by virtue of the surrender deed, which had a consideration amount of rupees 6,700. And has recorded that such deed was in violation of Section 46 of the Chotanagpur Tenancy Act. The finding of fact recorded by the Learned Commissioner that the recorded rayat was dispossessed by virtue of the surrender deed, which was having a consideration amount of rupees 6,700, which was actually a deed of sale. This court is of the view that the date of dispossession by virtue of the deed of 1946 cannot be disputed. I am relying on the wrong case. The 1992 Supreme Court. Just a Here, 1992 Supreme Court, page 195. Wherein forceful disposition will also come within the meaning of transfer. Okay. Certainly, it is transfer. In view of the aforesaid facts and circumstances, this court finds that the Learned Commissioner has clearly recorded that the recorded tenant was dispossessed by virtue of the deed of surrender, though termed is as a deed of sale, way back in the year 1946. And thereafter, the recorded tenant filed the application under Section 171 of Chotanagpur Tenancy Act only in the year 1981-82.
there is no whisper of any claim raised by the recorded tenant during the period from 1946 to 1981. In view of the judgments which has been relied upon by the Learned Counsel for the appellant, this court is of the view that although no period of limitation as such has been prescribed for restoration of land under Section 71 capital A of the Jharkhand Tenancy Act, but there has been inordinate and unexplained delay, which is about 34 years in filing an application under Section 71A, and accordingly the impugned order of restoration cannot be sustained in the eyes of law. Consequently, the same is hereby satisfied. District petition is accordingly allowed.